welcome to hello friends. Hello friends, welcome to MeritHub. You all are know that this lecture is dedicated for SSC JE, RRB JE and the state AE JE mechanical students. Those are preparing for those exams. This lecture is very important. Okay, in this lecture we discuss about the previous year questions of fluid mechanics. And this is the class number 21. Okay, those students are not watching the previous classes, please go through the playlist and you can watch from the playlist. एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में बता देना चैनल क्लास कैसा हुआ. ओके, so fluid mechanics, strength of material, or this type of subject is important for their numerical. So this इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्लीज़ आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए. ओके, हो गया है, ज़्यादा ही बात हो गया. ठीक है, मेरा नाम है बुद्धदेव पाल. आई एम स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. I also prepare for the state JE examinations. So you also join with me for discuss the previous year questions answer. Let's start from question number 501. The imaginary line drawn in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as. This is the definition of which the streamline. This is the definition of the streamline. The definition of the streamline. A streamline at any instant can be defined in the imaginary curve or the line in the flow fluid so that the tangent to the curve at any point represent the direction of the instantaneous velocity at that point. कोई भी स्ट्रीमलाइन का कोई भी आप टेंजेंट खींचोगे तो उस टाइम उस फ्लूइड का उस वही पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में है वो बता देता है. एंड पाथ लाइन फॉर द ए फ्लूइड पार्टिकल, कौन सा डायरेक्शन से फ्लो हुआ वही है उसका पाथ लाइन. इट इज फॉर द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स, ओनली वन पार्टिकल्स. If path line is line traced by a single fluid particles as it moves over a period of time, thus a path line indicates the direction of the velocity of the same fluid particles at the successive instantaneous of the time. फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना. जो पाथ लाइन का कॉन्सेप्ट है वो लैग्रेंजियन अप्रोच फॉलो करता है. नहीं तो इलूरियन अप्रोच फॉलो करता है. दोनों में से कौन सा अप्रोच फॉलो करता है पाथ लाइन फ्लो? लैग्रेंजियन अप्रोच और इलूरियन अप्रोच. जिसको पता है कमेंट में बताना. लाइन संपर्क भी जान लेते हैं थोड़ा. स्ट्रिक लाइन क्या है? स्ट्रिक लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसको माइंड में रखना. स्ट्रिक लाइन इज इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी व पिक्चर, इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ fluid lines. Okay, a streak line is the at any instant of the time is the focus of the temporal location of all the particles that have the pass through a fixed point and in the flow field. In the steady flow, since there is a no change in the flow pattern, streak line, streamline all are in the same. streak line का example हो जाता है आपका सिगरेट का स्मोक है, चिमनी का स्मोक है, जो ऐसे 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 जाता है, ऐसे ऐसे जाता है. जो इंस्टेंटेनियस पिक्चर है यही है स्ट्रिक लाइन. फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लो occurring in a pipeline when valve is being opened. A, steady flow.
B. Unsteady flow. C. Laminar flow. D. Vortex flow. Flow occurring when the pipeline when uh, sorry, flow occurring in a pipeline when valve is being open. होना चाहिए तो अनस्टेडी फ्लो, क्योंकि valve ओपन होगा तो फ्लो होगा अनस्टेडी फ्लो ना. लेट्स चेक करते हैं. Unsteady flow occurring in a pipeline when valve is being opened is unsteady. A flow in which the quantity of the liquid flowing per second is not constant is called the unsteady flow. Flow properties. The flow parameters let's are if do not change with respect to time, this is called the steady flow. If change होगा तो this is unsteady flow. फ्लो पैरामीटर्स आर इज वेलोसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, कोई भी पैरामीटर ऑफ फ्लूइड. आई वांट टू गिव यू बेस्ट, ट्राई कर रहा हूँ आप अच्छे से समझे क्यों आंसर का आंसर करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन क्या है. A one dimensional flow, each one which is uniform steady uniform flow takes place is in straight line involves zero transverse component of flow. One dimensional flow, each one which it's steady and uniform flow. स्टेडी भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है. गलत आंसर दे दिया और आंसर सही आंसर होगा इन्वॉल्व जीरो ट्रांसफर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो. यस, दिस इज द राइट appropriate because the 1D flow is the only one direction flow is involved. the transfer direction में कोई भी फ्लो नहीं होगा. ऑप्शन पढ़ना चाहिए था. स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो का तो कंसेप्ट कुछ और ही है, तो मैं कॉन्टिन्यूअस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, इसीलिए हो गया स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. सॉरी फ्रेंड्स, डी इज द आंसर इन इन्वॉल्व्स द जीरो ट्रांसफर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो. क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं होगा, ओनली एक्स डायरेक्शन में फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. क्या बोल, देखो स्टेडी है एंड नॉन यूनिफॉर्म है. स्टेडी होने के लिए क्या चाहिए, जब पैरामीटर है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म यानी स्पेस के साथ चेंज होगा. ओके, फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट एन द इंक्रीजिंग रेट. फ्लो थ्रू एंड द एक्सपेंडिंग ट्यूब एट ए कांस्टेंट रेट. Flow through a long pipe at a decreasing rate. Flow through a long pipe at the constant rate. Non-uniform problem ना, flow through and the expanded tube at a constant rate. देखो सही, बार बार एक ही डेफिनेशन आ रहा है, तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बोल दिया है ना, बार बार नहीं बोलना चाहिए. एक ही बात बार बार दोहराओ, आप लोगों का भी मजा नहीं आएगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन exist when the flow is tangential, parallel, irrotational and rotational. Velocity potential function is exist for the irrotational flow. देखो क्या है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट होगा फॉर irrotational flow, the curl of the velocity vector is zero. There is the exist of the scalar function velocity potential. In this case, curl with the velocity vector is equal to zero, means the flow is irrotational. Velocity potential exists only for the irrotational flow.
यानी डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर यू प्लस डेल्टा स्क्वायर यू नो फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई डेल्टा स्क्वायर फाई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई by delta z square equal to 0. This satisfy the Karl equation, von Karlman. Next question, friends. The stream function of the two-dimensional flow psi equal to 2xy. The flow, देखो फ्रेंड x जो x and y है यानी कि it is depend on the space. Okay. Rotational, irrotational, vortex flow, unsteady, pulsing flow. Two-dimensional flow, unsteady pulsating, irrotational flow. देखो क्यों curve of velocity, curve of the velocity potential stream function is 0, so it's the irrotational flow. Next question. Streamlines, path lines, streak lines are the identical for steady flow, unsteady flow, uniform flow, non-uniform flow. बोलो फ्रेंड्स, streamlines जो path line and streak line identical for the steady, in uniform, unsteady and non-uniform. This uniform flow, steady flow. For steady flow, streamline, path line and streak line identical. At any point in the steady flow, the tangent of the path gives the direction of its velocity. The properties of the liquid flowing in a variable flow do not change over time at any point. Friends, I also last time, so if I wrong any question, please छोटा के मॉक कर देना और ट्राई करना आप करेक्ट करो, ठीक है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइन ट्रेस्ड बाय सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एज इट मूव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड. इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही आना चाहिए, पहले मैं बताया था. एक एक जो फ्लूइड है, एक फ्लूइड पार्टिकल्स का पाथ ट्रेस करोगे तो हम लोग का मिलता है पाथ लाइन उस फ्लूइड पार्टिकल का. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. Which of the following represents steady uniform flow? Steady यानी स्पेस टाइम के साथ में फ्लो पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए, एंड यूनिफॉर्म स्पेस भी चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम पैरामीटर स्पेस के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए. सो फ्लो थ्रू ए डाइवर्जिंग डक्ट नहीं, flow through a diverging duct at any decreasing rate, flow through a long pipe at constant rate, flow through a long pipe at decreasing rate, through a long pipe at constant rate. Next question. In a flow, locus of particle which have earlier passed through a prescribed point is called. This is a streak line, timeline, streamline. Locus of particle which have passed through a prescribed point. पार्टिकल्स के लिए पाथ लाइन. फिर भी देख लेते हैं
राइट बोला या रॉन्ग? ओके, रॉन्ग. दिस इज द स्ट्रिक लाइन. क्यों? A streak line at any instant of the time is the locus of the temporary location at all the particles that pass through a fixed point. ओके, डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान में रखना. A streak line at any instant of time is locus of the temporary location of all particles that pass through the fixed point. Next question. In a forced vortex, the fluid velocity is inversely proportional to the fluid rotates without any relative velocity. The rise depends on the specific weight. The rise is the proportional to the cubic of the angular velocity. No, cubic टिबिक नहीं है, स्पेसिफिक वेट के साथ भी नहीं है. द फोर्स वोर्टेक्स जो है, डिस्टेंस, फोर्स वोर्टेक्स जो है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. देखते हैं कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस विदाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी ज़्यादा होता है, रेडियस जब ज़्यादा होता है. नहीं, इनवर्सली होता है. वन, ए इज द आंसर. बी, द फ्लूइड रोटेट्स विदाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी. कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता है. देखो एक्सप्लेनेशन दोस्त. In forced vortex motion, the energy supplied to fluid by the external energy at the fluid rotates without any relative velocity. Forced vortex motion is generally rotational fluid flow. B equal to R omega. Using the stream function in a two-dimensional flow automatically satisfy. Streamline function automatically satisfy continuity equation. Okay. Next question. The total pressure on the top of closed cylindrical vessel completely filled with the liquid is directly proportional to. It's directly proportional to square, none of these. Directly proportional to देखो r to the power 4, radius to the power 4. ओके, इसको भी ध्यान में रखना रिलेशन को. The rise of the liquid along the walls of a revolving cylinder as compared to the depression at the center with the respect to initial level is, this is same. Y equal to H. A stream function is given y sigma equal to 2xy. The magnitude of the velocity 3 to 4. So magnitude of velocity equal to v equal to root of v x root over u square plus y square. U equal to d sine by dx and y equal to, सॉरी उल्टा होता है, u के साथ y होता है एंड x के y के साथ x होता है, d साइन बाई dx. इसको डेरिवेशन करो x के सापेक्ष में और y के रेस्पेक्ट में. उसके बाद में इसमें y और x का मान पुट कर देना, जो मिलेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. देखो
v equal to d phi by d psi by dx and coming to y। देखा ना, x के साथ ई भी आया है एंड y के साथ आया है u, और जो दोनों में एक को माइनस करना होता है, और इसी को उसको y को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इट्स 10 यूनिट। खुद सॉल्व करना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग flow parameters exist both in the rotational and the irrotational flows? Vorticity, stream function, velocity potential function, both vorticity and the stream function. Vorticity and stream function. Only stream function. Irrotational flow, the vorticity is, yeah, oh sorry friends, irrotational flow यानी तो ओमेगा इक्वल टू जीरो, सो vorticity किधर से आएगा? vorticity इक्वल टू क्या होता है? vorticity इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। General continuity equation of the three-dimensional fluid flow in the incompressible. Okay, so density is constant. Fluid for the steady flow, UVW is the component of the x, y, and z. So delta U by delta x plus delta V by delta y plus delta W by delta z equal to 0. A is the answer. For a irrotational flow, delta square phi by delta x square plus delta square phi by delta y square equal to 0, यानी कार्ल इक्वल टू 0 is the equation by this Chauzy Riemann and Reynolds Laplace Bernoulli's Laplace equation. See, our Carl is the Laplace operator. Okay, this is the Laplace operator. The streamlines and the lines of the constant velocity potential in and the inviscous irrotational flow fluid from parallel grid lines placed in the accordance with their magnitude intersection grid net with arbitrary orientation orthogonal grid system. It is the orthogonal grid system. दोनों perpendicular है, फिर भी चेक करते हैं। यस, यह बार बार बैक हो जा रहा है। In the fluid flow, the equipotential lines and the streamlines perpendicular orthogonally cut to each other. Okay, phi into sin equal to -1 होता है, where phi is the क्या, velocity potential function and psi is the stream function. Next question, which one of the following statements is correct? Irrotational flow is characterized as one irrotational flow, यानी omega equal to 0. The fluid flows along a straight line. The fluid does not rotate as it moves along. The net rotation of the fluid particles about their mass of centers remains 0. Streamline of the flow occurs carved at the closely spaced. जो कोई भी है आंसर दे सकते हो तो कमेंट में आंसर दो, कौन सा आंसर करेक्ट होगा चारों में से, ए बी सी डी से। I think C is the answer. The net rotation of the fluid particles about their mass center remains 0. This is the irrotational flow का जो definition है यही है। फिर चेक करते हैं क्या है। C is the answer. A flow is the fluid does not rotate about their own axis and remains their original orientations. Is that the net rotation of the fluid particles about their mass center remains 0. Right definition.
Next question, smoke emitting from the lighted cigarette represented point, streamline, streak line, path line. इसका आंसर मैंने पहले ही दिया, सो आप में से कोई भी आंसर दे सकते हो तो दो, तो ठीक है. दिस इज द streak line. Streak, because it is the imaginary picture of the flow line. Next question, the velocity potential function phi is given 5x square minus y square. Calculate the velocity component u and v. Okay, velocity component u equal to delta phi, minus delta phi by delta x, and v equal to delta minus delta phi by delta y. Here you put first differential with respect to x and with respect to y, then you put the this 4 into 4 comma 5, then the answer is coming u and v. चेक कर लेते हैं. This coming minus 40 units and the units. The velocity potential is defined as the scalar function of the space and time such that its negative derivative with respect to any direction given gives the fluid velocity in that direction. The line along which the velocity potential is constant is called the equipotential line. If the flow is irrotational as well as steady, it is known as irrotational as well as steady. Non-uniform flow, not possible. One-dimensional flow, irrotational or steady, क्या पता चलेगा? Potential flow, yes, it's potential flow. In the flow as well the steady, it known as the potential flow. For the velocity potential flow, it is not necessary that the flow is steady, but it always in the irrotational flow. What is the name of the flow pattern generated by the trajectory traced out by a moving fluid particles? ये मूविंग फ्लूइड पार्टिकल्स को ट्रेस्ट करोगे तो क्या होगा? ट्रेस्ट करने के बाद जो मिलता है वो पाथ लाइन होता है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वीडियो हेल्पफुल हुआ तो आपके लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच.